ठीक है। तो वो लोकेशन पॉइंट हमारा नहीं हुआ, कल रात बारिश हुई इसलिए स्लीपर ही हो रहे हैं, वो वहाँ जाने का था। So we just stopped in Tamini Ghat Road and it's almost 6 o'clock, 609, and look at the view. That's truly paradise of Rekas Tamini. तो जर्नी तो काफ़ी खूबसूरत हुई थी। बादलों ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था और साथ में तामिनी के पहाड़ तो थे ही। One thing I want to mention is that it's from 2022 monsoon. I'm a bit late maybe. As each dawn breaks, we edge close to our destination horizon. Each day unfolds like a reel in epic cinematic journey, weaving our story towards the crescendo of our destination. Take a look from above. बाइक राइडिंग ये समीकरण खत्म होने के बाद हम सफ़र के और करीब ऑफ रोड पे पहुंच गए थे। कंडीशन ऑफ रोड इज एज यूजुअल बट डेफिनेटली अ सीनिक रोड। कार रेस येतो एफपी पाहिजे यार खरंच। अबे ते अपन ते व्हिडिओ बनवते असं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है एंड अभी जस्ट 2-3 किलोमीटर लेफ्ट एंड लुक एट द व्यू। I will see you in cinematic also. As the sun begins its ascent, painting the sky in a hues of a gold, nature's beauty unfolds before us. A rugged path winds alongside a cascade of waterfalls, its gentle roll surrounding the morning. In the picturesque setting, the perfect sunrays dance upon the rice grass, casting a golden quilt over the entire field. Amidst the scene, canvas, the melodious symphony of a birds greets the early morning, composing a scene straight out of a cinematic masterpiece. Welcome to the breathtaking embrace of a nature's exquisite symphony, creating such a vivid and stunning scene. Even in the realm of our dreams, proves to be immense challenge. Inaudio. And now, let's ride through a dark tunnel.
आपण गाडी रस्त्याला लावूया जरा हे की नाही. ते बघ तिथं खाली जायला इथूनच कुठेतरी म्हणजे वरनं. पहिले आपण बघून घेऊ ना कुठून कुठून जायचं. धरतो का माझ्या इथं जरा? हेल्मेट ठेव ना इथं सगळं. हा ठेवतोय. दे इकडे, हात दे हात दे. हे काय हे झाड धरलंय मी तुझे हात नाही इथून झाड तुटून जाईल बागल. जाणार आहे का तू तिथनं खाली तिथं व्हिडिओ काढ. हा काऊन नाही. इथनं जायचंय का काय कसं जायचंय काय माहिती. खालून असतील ना रस्ता तिथून. मला तर नाही वाटत आहे. ते बघ तिथून असेल तसं. हा पण ते केवढं हे अरे स्टीप चोरी डायरेक्ट घरी सोडली असते. हा कोणता वॉटरफॉल आहे? कुंभे. हाच आहे का तो? मग काय काय हे एवढ्याशा दोरीने का होणार आहे? काय तर होईल खाली बाबा, जायचं. पकडून हे घे तुला. तू काय व्हिडिओ चालू ठेव का? बंद कर की बाबा. येऊ का? आलो का? ऑलमोस्ट आलो. चल वाटते हा दगड ठीक आहे होऊन जाईल. येस. मी कॅब आले ना तू माउंट आणले. हा भाई रस्ता आहे इथं. टर्न करून दाखव ना रस्ता. भाई रस्ता ये अभी इथून आलो. लेकिन अभी वहाँ नीचे उस पॉइंट पे जाने के लिए वहाँ से जाना है शायद. पहले हम यहाँ से आए थे लेकिन वहाँ से रोड नहीं, फिर यहाँ से ही देख लिया लेकिन नहीं है. वहाँ से दिख रहा है वो वाला रोड लेकिन पता नहीं वहाँ कैसे जाते हैं. शायद उधर व्यू पॉइंट से वगैरह जाने हैं. फेक. बंद कर. वो तो मोमेंट है भाई. फेक फेक. ये की थोड़ा बोचे त्याला इथं रस्सी घेत करत नाही घ्यायचंय तुला. तुला त्या आधाराला घ्यायचंय. मला इथं काटाय. हा मग काटाय तिथं ते दे मुवमेंट दे तुझी इथं. तुझा कॅमेरा दे इथं. चालू आहे हा. दुसरा कुठं पकडला होता? दुसरा पकडलाच नव्हता. दुसरा हात दाबला होता खाली वरती चढलो होतो. मुवमेंट आहे भैया. ये ना ये वडून वड वड माझा. ए होय मी धरलेला दगड तर दगडच नव्हता. हे बंद झालं ऑटोमॅटिक. हात करते हे झालं. पण शूट होते आय थिंक. तो वो लोकेशन पॉइंट हमारा नहीं हुआ. कल रात बारिश हुई इसलिए स्लीपर ही हो रहे. वो वहाँ जाने का था लेकिन अब हम यहाँ से व्यू पॉइंट से देख रहे हैं. मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ये स्लीपर ही कितना है. ये जो पूरी रेड मिट्टी है वो पूरी फिसल रही है. मेरे शूज़ भी फिसल रहे हैं. पूरे पैर भी भर गए. अगर थोड़ा सूख था, अगर ये फिसलती नहीं तो उस लोकेशन तक जा सकते थे. ये बीच वाला पहाड़. सो वी आर हेडिंग बैक एंड ये स्लीपर भी काफ़ी है. अभी इतना प्रिकॉशन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है. इट्स नॉट मच फेमस. सो यहाँ पे कोई लोग भी आते नहीं है. हम दो हैं और वहाँ पे 4 आए. तो वी कांट मेक विथ दैट माउंटेन. तो पूरा स्लीपर ही था इसलिए वहाँ तक हम ना ही जा सके. और रोप भी कैरी नहीं की थी. तो नीचे तो जा सकते लेकिन ऊपर नहीं आ सकते थे. इसलिए फिर वहाँ से हमें वापस आना पड़ा. फ्लो भी काफ़ी तेज़ हो रहे हैं. कल बारिश हुई थी, पानी भी आया और अभी
अभी तो बारिश नहीं आ रही है लकीली, लेकिन बारिश से पहले अभी हमें निकलना है। अगर बारिश में यहाँ पे फंस गए तो रोड भी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो हम निकल रहे हैं जल्दी से। बस वो वाला माउंटेन का शूट रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। When we visited in the early days of 2022 monsoon, very few people know about the Kumbhe Waterfall. I think I am a bit late to create a vlog about it. Since then, multiple people, influencer, helped to establish a good and clear path. Let's take a look from above. Witness the sheer majesty of a massive, stunning waterfall, immense in every movement. Inaudio. 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 Landing on the ground, we ventured towards the next waterfall. Though we missed that particular spot, we are determined to return stronger and stronger. Inaudio. तो ये भी ऑफबीट वाटरफॉल है, कुंभे के नज़दीक ही है। लेट्स सी ये भी मिलता है कि नहीं। तो फिर से पक्का हो गया हमारा, ये कोंडे वाटरफॉल के ये कुछ तो है, हम पता नहीं क्या है। अरे बंद झालं। प्रॉब्लेम येते यार, पाणी बंद काल. Inaudio. पूर आहे ना. अरे ऑफ का नहीं होते, हाँ। और फिर हम वापस चल पड़े घर की ओर, एटलीस्ट सम गुड फुटेज ऑफ अ फॉल एंड इट्स पार्ट एंड एक्सपीरियंस के साथ। लवकर चल, लवकर चल तो फरा काढून But it's not end. As I said, we will return and we returned. See you in the next episode. Take a look on these brief previews.